in understanding legal transactions. Today's session will provide valuable practice insights into one of the most essential aspects of legal practice. We'll begin in just a moment. Before we formally begin, let me ask you a few questions. Have you ever wondered what exactly is legal due diligence? Why is due diligence conducted before mergers, acquisitions, or investments? What documents are typically reviewed during a diligence process? What role do lawyers play in identifying legal risks during transactions? So this is a crucial process in legal and corporate world. It helps identify potential legal, financial, and regulatory risks before entering any business. Today's session on due diligence basics will introduce us to the fundamentals, its importance, the different types of due diligence, the process involves, and the practical role. We are confident that today's session will provide everyone with a strong foundation and a practical understanding of this essential legal practice. Today's session is organized by the Collective Counsel, a platform dedicated to bridging the gap between legal education and practical learning, though mentorship opportunities, skill based programs, career focused training. The objective is to help law students and young legal professionals develop practical skills, gain meaningful exposure, and prepare themselves for successful legal careers. It's now my privilege to introduce our esteemed speaker for today's session, Advocate Shubham Kenekar, distinguished legal professional, serial entrepreneur, a startup mentor, currently associated with Vidhinya Associates, which is in collaboration with Collective Counsel. As a principal associate, he specialized in corporate law, startup advisory, intellectual property, and business strategy. With extensive experience guiding startups and businesses, he brings a unique blend of legal expertise and entrepreneurial insight. We are delightful to have him with us today. On the behalf of the Collective Counsel, I extend a warm welcome to you, sir. Without any further delay, I request Sir to kindly take over the session. Over to you, Sir. Yes, thank you. Firstly, let me know if I'm audible. Yes, sir, you are audible. Yes. What I'll do is I'll start sharing my screen so that you can get the better hang of what I'm trying to. Okay. Hope my screen is visible. Is it okay? Yes, sir, it's visible. It's okay. Yeah. So first of all, thank you for being here. And most important part about due diligence and subject itself is that let me be very blunt and very straightforward in the first moment itself that due diligence is a very vast topic actually. It is very hard to cover all the points, all the understanding in just few hours or 1 hour for that matter. You have to develop this habit attitude from year long practice understanding. Now as a teacher who is teaching in various colleges as well and also teach serial entrepreneurship and skill based various programs, one thing that we teach in management theory is that there are two types of people in the world. There is theory X and there is theory Y. So theory X believes that people are innately good human beings. So every person who is there, he's a good person by law, by and large. So when you have to do certain work, you appeal to the goodness of the heart of that person. Okay, so you give him rewards, you give him incentives, and that person will start performing. This is one of the theory in the management. But then there is theory Y, which says that no, this is not the case. Persons are not inherently good natured. People or human beings for that matter are inherently bad, or we can say gray or black at their heart. So it is not the incentives or the motivations that you give them and then start working. It is you start fearing them, you start giving them deadlines, you start pressurizing them and use the fear as the method to advance what you want to get from those people. So based on this two theory, when we talk about due diligence specifically,
And a lawyer who is practicing in the field of due diligence, whether it's corporate due diligence, legal due diligence, mergers and acquisitions, finance, tax, IPR, and whatnot, we'll just go through everything in further. Our main aim is to understand what can go wrong. There is also a law, you must have heard of it, that anything can that can go wrong will go wrong. जितना बुरा हो सकता है उतना बुरा होगा. As a due diligence lawyer, your work is to understand कि ज्यादा से ज्यादा क्या बुरा हो सकता है, and how how can we tackle it, and are we in a position to take a decision or not take a decision based on how exposed we are you with me? I need feedback also. It's like it should not happen that I'm only speaking. Okay. Yes, sir. Yes. Yes, sir. Yes, sir. What is instinct and what is due diligence? For example, you can see a car. Okay, car looks good, it runs perfectly fine, it is great deal. You can look at a company and say that, wow, what a company, great company. But then there comes a part of due diligence in which, okay, you have decided, you have to look at the car, it's okay, nice, it's run perfectly, but have you checked the engine status? Have you checked the service history, whether it has met with some accidents? What are the insurance claim? What are the traffic challans that are there on this bike? Is the registration in right place? Is there are any pending bank loan on this car? If you don't check anything and you purchase a car for that matter, for example, you don't do this minor due diligence. Let's take a very small example. There is a bike which is sold. You don't do your due diligence. The bike is purchased. You find, okay, it's perfectly fine. I'm getting just 25,000 and getting this bike. But once you purchase the bike, and once in a while, that signal traffic guy catches you and he says that there are almost 30,000 rupees of traffic challans that are pending on these bikes. So your decision of taking bike has not been due diligent. So this is what we talk about. And like I said, as a due diligence lawyer, you must always think what can go wrong. Okay, we'll start. I'll just tell you an interesting story, and so that you can understand what I mean to say in a better way. This is a real story, happened with one of my brother just few days back. Now, what has happened is he was just returning to his home. Okay, just outside his home, he met with an accident. There were two-wheelers, both of them met with an accident. The other bike was damaged to a large extent, and there was also small skirmishes. And then they guys decided that for one night, what they will do is, since my friends or my clients, let's say my clients' home was just next to the place where the accident took place, they said that you take this bike, keep it with you for overnight. We will take your bike and we'll go home and we'll sort out this matter in the morning. We will come and we'll take this bike to garage or service center and we'll make these repairs. Now, as a due diligence, what do you think is wrong with this proposition? Okay, let it aside that it's a criminal case and whatever happened. Don't go into that for now. But do you think that this decision of leaving a bike and taking someone else's bike going home is a good decision? I need your answer. What do you think? The person who decided to keep the bike can also get stuck in a criminal case. That is also, but also let me get clear one more thing. The bike that they are keeping at my client's place, the one which is not functioning, it is a very high end bike. Okay, it is lot costlier than the bike that you are giving them. So just commit to that. Now, what do you think? What can go wrong in this? Income tax raise. I did not get you, please repeat. सर हो Income सकता है tax कि वो raise. बाइक चोरी की हो. एग्जैक्टली exactly. हो सकता है वो बाइक चोरी की हो. वो बंदा चोरी करके आया, एक्सीडेंट में मिला, एंड देन वो ये बाइक लेके गया और कल वो आया ही नहीं. तो नाउ nobody will think that वो बाइक चोरी की हो सकती है. अ नॉर्मल पर्सन विल थिंक यार एक्सीडेंट हुआ है, इसकी गाड़ी खराब हुई है, मैं एक दिन रखता हूँ, वो मेरी ले जाता है, वो बड़ी महंगी है, वो आएगा जरूर. ये दिस इज अ नॉर्मल पर्सन थिंकिंग. बट व्हेन अ लॉयर और ड्यू डिलिजेंट विल think क्या उसकी गाड़ी की चोरी की है. तो सो व्हाट इज द ड्यू डिलिजेंस दैट यू विल डू? दिस क्वेश्चन इज करेक्ट. तो क्या करोगे आप? एनीवन? We will
check that it's theirs Yes, and they're registration papers, reliable. Aadhaar card, PAN card, you take some identity documents. Okay, so this is the basic thing. Now, yes, anyone wants to say anything? Yes. So, what is the mechanics of due diligence in everyday versus corporate life? So, this due diligence will specifically focus on corporate. Okay. First of all, ये सब छोड़ के just we'll discuss on one more topic. Which law field do you think is one of the most highest paying law field right now? There are many laws, but what do you think? Because after all, you're all students, you're all practicing lawyers. हम पैसे के लिए आए भाई, ठीक है? और हर चीज का एक कॉस्ट होता है. We have spent our 3 years, 5 years practicing, etc. What are the Corporate. fields of law? Corporate what? Corporate. नहीं corporate नहीं, corporate बस State एक area corporate. है. In corporate also there are many areas. So what is those areas? Sir, Corporate M&A. है M&A. Someone says M&A. Yes, M&A. Next. सर AI का जो चल रहा है अब उसके लिए ज्यादा Yes, AI laws. Correct, correct. AI surveillances, AI manufacture. Yes. Cyber security. Intellectual IPR, great. सिक्योरिटी Cyber वाला सर security. Cyber security cyber also ranks security. third. IPR also ranks और fourth. और जो Yes. सर आजकल फ्रॉड वगैरह हो रहे हैं सारी सब चीजें वो उनका भी cyber ज्यादा security. चल रहा है वो cyber security में आएगा. Yes. जी 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 Cyber security. So overall, there are one or two answers I can get is M&A, which is right. IPR, which is also right. Cyber security, AI regulations, tech law is also right. Two things we have missed, and MNC labor area. yes, yes. MNC labor area. MNC labor area, but labor goes into most on a litigation part. So it's not that a desk job, and any person who is looking into labor compliances, again, yes, it is, but it is not on the it's not coming in the top five. But yes, we can take it at 6, 7 number. Two things we are forgetting. None of us thought about those two things are entertainment law, media law, okay, and DPDP, that is data privacy. Okay, and all these things, all these, the high paying jobs that we have discussed right now, 6 or 7 up till now, whether it is IPR, M&A, tech, media, uh, and cyber security, AI, data privacy, एंड all सर of them. Yes, yes. सॉरी आई एम सेइंग इन हाउस काउंसिल जो होते हैं वो भी ज्यादा कमाते हैं लेकिन इन हाउस काउंसिल करते क्या है? सर जैसे कि मतलब एक होता है ना मतलब एक कंपनी के लिए जो काम करते हैं नहीं नहीं, समझ में आया. आई गेट द पॉइंट. आई एम सेइंग द फील्ड. In-house counsel is in-house counsel. He'll do all types of odd ओके jobs. ओके सर Yeah, he'll do all types of jobs. Even if you take that in-house counsels for big league, AZB and partners, etc. So in-house counsel, okay. But again, what I mean to say is everything, all the fields that you have said to right now, all the things would have to do with your due diligence matters. It's completely due diligence. If you have your hand and hold over due diligence, okay, your expertise might change, but your attitude towards any of these firms, whether it is M&A, IPR, cyber, data, media, tech, sports, now space law is also coming up in India, energy law, maritime law, everything has to do with due diligence. And that is why due diligence is very important. Okay. Okay. I've just received a message that I need to turn the camera on. Just a minute. I'll stop the sharing screen and I turn my camera on. Just a minute. मैं इतना अच्छा नहीं दिखता हूँ रे, मतलब ठीक है. I've just written मेरा कैमरा, am I visible? मैंने कैमरा चालू कर दिया. Yes. यस सर I'll start sharing. Yes, we'll start Yes, sharing sir. again. Yes, yes. I'll start the screen again. So this is what is mechanics of due diligence. Now there are 4 dimensions to this. Okay, whether it is mechanics of due diligence in everyday versus corporate. For example, first dimension is that of asset. Okay, second dimension is inspector, records, and goal. So you need to understand that what is the goal of this due diligence. Okay, in everyday aspect, I've given you examples. In other also, I've given you the examples. Okay, so what you will check, what are the records, who is the inspector, and what is the asset. For example, in our previous example that we talked about, we were looking at the car. In everyday example, which is a car, which is our asset.
But in terms of M&A or corporate things, when we are doing, our asset becomes our company, which is a mid-sized company, or the company is taking certain decisions, certain property, or certain transaction that becomes our assets. Who is the inspector? Inspector is a person who will inspect the things. Okay. So in this matter, the single trusted mechanic. But in terms of corporate or M&A or any other matters that we have discussed just now, there will be a team of specialized lawyers, accountants, and industry experts who will do the due diligence. What things you have to check? Also, I'll give the list after this also. For example, I'm just comparing the examples that in the matter of car, you have to check the service history registration paper. But in terms of corporate or property or a transaction, you have to look at the virtual data, which is huge size, and how to manage that, how to do that, what are the questionnaires आएगा आगे PPT में. इसका गोल है, what is our goal? So this, ये जो last है, ये goal is very important. In any due diligence matter, our only goal is whether to take the decision or not take a decision, or whether if you're taking a risk, what level of risk you have to take. This will be decided on due diligence. Okay. For example, मैं इसको और थोड़ा सा अच्छी तरीके से समझाऊंगा. Tell me, how many of you watch Shark Tank? Shark Sometimes. Tank में बहुत सारे, yes, Shark Tank में बहुत सारे कंपनीज आते हैं, and every product that you see in the Shark Tank you find यार बहुत बढ़िया है यार. मतलब और जिनको तो those projects or businesses that get deal, you feel that what a good product that is. Am I correct? Let me tell you a simple fact about Shark Tank. You know, 70% of the deals that are kept on Shark Tank does not go through. मतलब अगर 100 लोगों को मिला है, out of those 70 will not get the funding. In the camera, in the show, if the people are committed the money, but you will see people saying that provided the due diligence. And it happens, it has happened, and it is happening that 70% of those funds are not released because due diligence है ही नहीं. तो ये क्या है? For example, what is the due diligence? There is a seller and there is a buyer. For in terms of seller, there might be undisclosed litigation, there might be default, there might be compliance failures, and as your due diligence correcting the matrix of asymmetric information. So what happens is, there is a person A, there is a person B. Person A wants to sell a company, person की बात हो रही है यहाँ पे. So there will be a person, कोई ऐसी मतलब इसके पास कोई information होगी जो इसके पास नहीं होगी. The person who is buying will have less information, the seller will have more information about his own company, and it can happen the other way around also. Okay. So this is a asymmetrical information. Both the people on the different firms are on the different status of information. Our due diligence will do what? They will balance it and get everyone on the same footing of the information, or वो same set of data or same set of information, then they'll take a decision. Okay. So again, this is never about proving a deal should happen. It is about discovering the truth. The truth turns out to be true, so your client can make informed decision, including a decision to walk away. हमें डील को बिगाड़ना ये हमारा मकसद नहीं है. हमारा मकसद है कि जो कोई भी हो, we must be aware of. Okay, if there are certain undisclosed litigations, or there are there are loans, there are liabilities, it's okay, but not disclosing that is a problem. है तो कोई प्रॉब्लम है नहीं, then your client can take his own decision कि हाँ मुझे पता है, लेकिन मुझे ये भी पता है कि how to manage that things, and then he's free to take his own decision. Okay. Now what happened is, where this due diligence comes into picture, it originated in USA under securities law in 1933. अब ये थोड़ा सा technical, मतलब this is a history, but since you all are students, I'm just giving you an overview. So what happens, in brokers and dealers who are selling securities were required to conduct a reasonable investigation. अगर आपने Wolf of Wall Street देखी है तो, otherwise वो penny stocks पे whatever happened, and then whatever happened in the great .com burst or Y2K boom, etc. So then that is when this term and this process came specifically decided in the act. Now then you can see the history. I'm not going into details because ये तो बस history और information है. We are here to give you practical knowledge, so ये मैं बोलूंगा नहीं. But ये धीरे 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 कैसे हो गया. But in terms of Indian context, बहुत ही बढ़िया चीज इंडिया में क्या हुई. It happened in 1991. It is liberalization. It is liberalization, privatization, and globalization. So first thing that Indians did was, actually सबको पहले बहुत डर लगा क्योंकि इंडिया में सब पहले closed economy थी. Everybody thought that once we will open up as a country or as a market for world, again the world will come and dominate us. You know what is the best thing that happened to India after this? It was the Tatas. Tatas took over the company and the chai brand called as Tetley's. आपने ये नाम सुना है?
So in 1993 or 2, I'm not sure, but even immediately after the globalization, Tata's took over this Tetley's brand. You know the Tetley's brand की mother company कौन सी थी? The mother company of this Tetley's brand was East India Company, British East India Company. So the company that ruled India for 150 years, just one phase of globalization, and it was the Tatas who took over that company, and that gave us a boom industry. अब ये करने में due diligence जाता है, ठीक है? Now again, I've told you where the due diligence operates, we have already discussed. Mergers and acquisitions, very important. Okay, then there is JVs. What are joint ventures? Basically, if you are any lawyer who पहले दिन अपने प्रैक्टिस में आता है, उसको ब्रेड एंड बटर मिलेगा अगर उसको थोड़ा सा सेल डीड आती है, ड्राफ्टिंग आता है, कन्वेंस डीड आती है, वो किसी बिल्डर का ड्राफ्ट करके देता है. प्रॉपर्टीज तो हमेशा खरीदी बेची जाती है. सो दैट इज योर फर्स्ट वे टू स्टार्ट, okay, earning on the first day itself. So that JV. So what is the JV? So for example, मेरे पास लैंड है, I have a land, पुश्तैनी जमीन है मेरी, बहुत सारी पड़ी है, बट इसका कुछ हो नहीं रहा है. So what I'll do, I'll contact with some builder, either Gokhale or Kumar or you know Paranspay, ये सारे पुणे के बड़े बड़े बिल्डर्स हैं. You contact them, say that sir, I have a such and such land in such and such place, I need to develop a building or a commercial complex out of which I'll get such. So land इसका, budget इसका, finance इसका. So ये जो होता है, this is called a JV or joint partners. So who becomes your clients in what cases? In mergers and acquisitions, the acquire board or the investors become your partner. In joint JV both partners are your partners. Bank financing, actually bank financing का lawyer से कम. I'm telling you, a deadliest combination of a person is who is also a lawyer, who is also CA or CS. So many of times the CA, CS will also pursue law, and that becomes a deadly combination because then they will understand bank financing. One of the things that we specialize in, or I specialize in, is startup advisory. तो हम जब startup funding की बात करते हैं, cap table, IP, founder agreements, ये सब होता है, जिसके बारे में अभी Shark Tank में we just spoke about the same thing, that as a startup funding or startup advisory. Then of course, most important part is IPO. Any company that goes into, you, I hope you all know what is IPO. That is initial public offering. अगर किसी को नहीं है तो just tell me, I'll just explain in short. तो IPO होते ही very important part is you have to submit everything to SEBI. That is the most stringent due diligence that one can do. Okay, you have to go through a lot of documents. You can go through बहुत चीजें करनी पड़ती है. So that is also an important part in IPO matters. Like I said, either your merchant bankers or SEBI will be your clients. And then again, I told you about real estates. There is property, there is encumbrances, buyers, financing, bank, ये सब है. If any questions, anything that you want to stop, ask me. You can just unmute yourself and ask me. Okay. Now, what is your mission first of all? Corporate document का एक section होता है operating ये सब. You can just check it out. The low risk environment, treat it as your foundation course in corporate law and not just a paperwork. ठीक है, क्या हो गया? Yes. If see, I'm sharing the PPT, so I cannot see your messages and raise hand. So if you have any questions, just वो कर. My mercantile law नहीं, somebody is saying mercantile law still exists. Mercantile नहीं, मैं maritime बोल रहा था. It's not visible. Okay. So if okay. Now, see what will happen if I shift to PPT. I won't be able to see all your messages, so it is better that you unmute and talk. Okay. And also at the PPT will I'll share the PPT also, and I'll share. I've made one document also, which is my internal document for all my juniors and interns. I'll show that document also. Okay. So once I go to the PPT, I won't be able to see your message. So it is better that you start speaking directly and or leave a message which I'll address in the last. Okay. Now, for example, imagine that is a 50 crore deal. Okay, a private equity fund wants to take a 20% stake in a manufacturing plant, Pune-based manufacturing plant. But before writing a check, we have to do a DD, abstract maps into directly physical. Now, basically, जैसे ये जो line है, abstract legal due diligence maps directly onto physical business reality. So what happens? जैसे मैंने again, we'll take example of Shark Tank again. So what happens in Shark Tank? उनकी बहुत अच्छी marketing deal, वो सब बातें करते हैं, उनका website is, everything is really good. But why these deals fail? Because जो बोला गया है, okay, what is the abstract legal and जो physical business reality है, उसमें फर्क है. और ये फर्क, this जैसे मैंने the word that we used earlier was information asymmetry. This information asymmetry will use. For example, if this is a manufacturing plant we are talking about, first of all, what you will check,
पहली बात तो जिस जमीन पे ये बना है उसके कागजात है क्या इन लोगों के पास? फॉर एग्जाम्पल, इफ इट ओके, दे माइट नॉट बी द ओनर, देन आर दे लीजिंग इट? Okay, is the lease valid? Okay, are there any pending litigations on the land or lease? Okay, so this is important thing to look for. I'll tell you an example in M&A thing that we were doing. You know, many of the corporate offices and corporate companies do this. Actually, they are operating from certain registered office. Those registered office are also not, they are not having the ownership document of those registered, or ownership मतलब ये नहीं चाहता कि they must have the sale deed, but at least if they are renting the place out, they must have the, you know, rent agreement for that matter. In one of our cases, the director was holding the power of attorney for that property. Look at the structure that I'm talking about. One of the directors of the company who was running a registered office in the area was not owning the company, was not owning the premises, was not renting the premises. He was having the power of attorney of the owners. Okay, so you understand? So this is the case Sir, that I happens. didn't understand. Yes, yes, I didn't understand. yes. जमीन है, तो अगर आपको कंपनी खड़ी करनी है, आपको जो रजिस्टर्ड ऑफिस है, वो रजिस्टर्ड ऑफिस के कागजात आपके पास चाहिए. यू नीड द डॉक्यूमेंट्स. अब डॉक्यूमेंट दो तरीके के हो सकते हैं, आइदर यू आर ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी, ओके, या यू आर रेंटिंग आउट दैट प्रॉपर्टी. दो ही चीजें हो सकती है, एक तो आप खरीदोगे या तो आप रेंट करोगे, बराबर है, यही दो चीजें होगी. बट हमारे केस में जो मैं केस अभी बताया, द पर्सन, द डायरेक्टर ऑफ द कंपनी, कंपनी जिस जगह पे थी, जिस रजिस्टर्ड ऑफिस पे ऑपरेट कर रही थी, उस जमीन के कागजात यानी ओनरशिप भी उसके पास नहीं था, और वो प्रेस रेंट आउट भी नहीं कर रहा था. मतलब ही वाज नॉट इवन हैविंग दैट प्लेस ऑन रेंट. ही वाज हैविंग द पावर ऑफ अटर्नी ऑफ द ओनर ऑफ द लैंड. तो आपको पावर ऑफ अटर्नी समझा नहीं, या व्हाट इज इट, व्हाट इज इट इज दैट यू Power of attorney. power of Power of attorney is, attorney. yeah, power of attorney is very simple document. It is, there are two types of power of attorney. There is a special power of attorney and there is a general power of attorney. For example, I am staying in London for that matter, or Dubai for that matter, और मेरी कोई properties है यहाँ इंडिया में, पुणे में. Now what happen is I am looking for a buyer, seller, you know, a buyer of my property. Okay, तो मुझे ये प्रॉपर्टी बेचनी है, तो मैं हमेशा तो लंदन से नहीं आऊंगा, दुबई से नहीं आऊंगा. तो मैं क्या करूंगा, आई विल गिव माई पावर ऑफ अटर्नी टू, फॉर एग्जाम्पल, टू माई पेरेंट्स और टू माई ब्रदर और टू एनी अदर पर्सन. जैसे व्हाट इज योर नेम, वट एवर. Anumita. यस, सो आई गिव माई पावर ऑफ अटर्नी टू अनुमिता. नाइल से, अनुमिता डू यू वन थिंग, आपके पास पूरी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये मेरी प्रॉपर्टी है, लेकिन आपको इस प्रॉपर्टी के बायर लाने हैं, उनके साथ डिस्कशन करना है, निगोशिएशंस करना है, आप सब करो. एंड में यू साइन द पेपर्स ऑन माई बिहाफ, ये भी मैं बता रहा हूँ. So this is called as Okay. power of attorney. This can be, there are two types of, like I said, there are two types of power of, there is a special and there is a general. When I give general power of attorney, इसका मतलब है कि शुभम केनेकर की जगह पे this person is, you know, the प्रति person, मतलब he is just a duplicate of Shubham, and whatever decision that Shubham will take, this person is allowed to take. Okay. in yes. So this is the general power of attorney, and special power of attorney is, I'm not giving you the entire responsibility, but yeah, ये कंपनी का या ये प्रॉपर्टी के लिए, नाउ आई माइट हैव 10 प्रॉपर्टीज, सो व्हाट आई विल डू इज, एक प्रॉपर्टी का पावर ऑफ अटर्नी somebody else, एक प्रॉपर्टी का पावर ऑफ अटर्नी somebody else. Okay, so this is the power of attorney. Now coming back to our this deal and manufacturing question, इसके पास स्टैट्यूटरी लाइसेंस है क्या? जैसे जमीन के बारे में I told you an example. Then there are statutory licenses. आपको पता भी नहीं है कि एक इंडस्ट्री मैन्युफैक्चरिंग बनाने के लिए व्हाट टाइप ऑफ लाइसेंसेस आर रिक्वायर्ड. सो देयर इज अ फायर लाइसेंस, हजार्ड लाइसेंस, स्टॉपैक लाइसेंस है, जीएसटी होना चाहिए. सो व्हाटएवर, इनके पास स्टैट्यूटरी लाइसेंस है क्या, इंक्लूडिंग द पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के लाइसेंसेस. Okay, are the environmental clearance has become a very used thing. I don't know how many of you are Pune or how many of you have heard about this very big deal or very big city, and if not, just go on YouTube and you'll find very reels. It is called Ghost Town of Pune Rao. There is wonderful city that was coming up in near Pune. It was called as Lavasa city. किसी ने सुना है इसके बारे में? Yes, Yes, sir. sir. यस सर. हाँ, ये Lavasa city was entirely collapsed. You know why? Everything was in place. There was only one due diligence aspect जो which was not taken care of, which was, it was environmental ड्यू डिलिजेंस का एस्पेक्ट नहीं हुआ था. अब वो ये एनवायरमेंटल प्रोजेक्ट रिपोर्ट क्या होता है, हाउ दैट रिपोर्ट इज डन, व्हाट इज सेक्शन हाउ, तो विल नॉट गो इनटू दैट एनवायरमेंटल ईसीएजी राइट नाउ. बट उस एक ड्यू डिलिजेंस ना होने की वजह से दैट एंटायर प्रोजेक्ट सस्पेंड. देयर वाज आल्सो पॉलिटिकल थिंग्स इन्वॉल्व, विल नॉट गो इनटू दैट डिटेल. बट फॉर अस एज अ स्टूडेंट, एज अ लर्नर, वी नीड टू थिंक कि यार एनवायरमेंटल क्लियरेंस नहीं था उनके पास. सो देन देयर आर मटेरियल कॉन्ट्रैक्ट, जैसे अभी ये इंडस्ट्री के बारे में बात हो रही है. सो
what are the contracts, because they will sell, they will have vendors, they will have sellers, they will have buyers. Okay, so are those contracts in place in, and in are you in control of that? Then most important part, सबसे पहले आइदर वो स्टार्टअप हो, मेरी एलएलपी हो, मेरी कंपनी हो, और बिग बिग एमएसएमई हो, माय फर्स्ट क्वेश्चन दैट आई नीड टू आस्क इज व्हाट इज द कैप टेबल। ये कैप टेबल पता है आपको? एंड देयर आर टू टाइप्स ऑफ कैप टेबल। जब हम एज अ ड्यू डिलिजेंस लॉयर किसी मतलब वी आस्क फॉर सर्टेन क्वेश्चंस टू दिस ओनर फाउंडर ना, वो ओरली कैप टेबल बता देते हैं, बट द ओरल कैप टेबल डज नॉट मैच द कैप टेबल ऑन द पेपर, जैसे फॉर शार्क टैंक में बहुत बार हुआ है। सो एनीबॉडी एनी डाउट्स विद द कैप टेबल स्ट्रक्चर? कैप टेबल मतलब जो हम प्रॉमिस दे रहे हैं? नहीं, कैप टेबल का मतलब होता है द इक्विटी स्ट्रक्चर। जैसे अगेन वील मूव ऑन टू शार्क टैंक एग्जांपल अगेन, क्योंकि यू हैव सीन दैट तो आपको समझ में आएगा। एक कंपनी है, कंपनी के 50% शेयर एक बंदा ओन कर रहा है, दूसरा बंदा 50% शेयर ओन कर रहा है। सो द कंपनी इज डिवाइडेड 50-50 शेयर्स। अगर 5 लोग हैं देन जैसे कि इसके 10 है, इसके 5 है, इसके 10 है, एंड 20% आर ईसॉप। ईसॉप इज इक्विटी स्टॉक, ये एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शंस। सो ये जो स्ट्रक्चर है कि कंपनी की परसेंटेज ओनरशिप कैसे डिसाइडेड है, दिस इज कॉल्ड एज कैप टेबल। बट लाइक आई सेड एज अ लॉयर, हमें कैप टेबल बोला जाता कुछ और है। जैसे बोला जाता है कि हम 3 ही है कंपनी में और हमारे पास इक्वल शेयर है, लेकिन व्हेन यू गो टू पेपर यू फाइंड नहीं, इक्वल नहीं है। एक का शेयर 20 है, एक का 25, एक का 50 है। सो द कम्युनिकेशन इन द कैप टेबल शैल मैच विद द कैप टेबल डॉक्यूमेंट। कैप टेबल का मतलब द कंपनी का एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर्स, और कितने शेयर होल्डर्स है, इसमें इसॉप है या नहीं, और क्या देयर आर दे शेयर्स दैट कैन मूव फॉरवर्ड। ओके, we'll move forward. Most important, it is not a checklist, it is a lens. Okay, I'll share this PPT, so don't worry, you can just read in your own time also. So very key takeaway जो आपने अभी पढ़ा कि what is the core definition, how it was origin, what is the purpose and what is the mindset. So remember the purpose, अगर आपको इतना भी समझ में आ गया ना आज के इसमें कि what is the purpose of due diligence, it is कि there is an information asymmetry, मतलब किसी बंदे के पास, the people who are entering into transaction or in any relationship for that matter, even there are material marriage के आजकल due diligence बहुत जरूरी हो चुका है, नहीं तो सिया गोयल वाला चीजें हो जाती है। So now if the two people are coming into any relationship, whether it is transaction, financial, tax related, anything, one of them might try to hide something from the other person similarly, and it goes both way. So as a due diligence, the due diligence person, what it does, it ये इंफॉर्मेशन असिमेट्री है उसको बैलेंस करता है ड्यू डिलिजेंस, इतना सिंपल डेफिनेशन है। एंड इट इज आवर व्हाट शैल बी द माइंडसेट, द माइंडसेट शैल बी दैट ऑफ एन एनालिटिकल एक्सरसाइज एंड मैकेनिकल वन। हाँ चलिए, ये कागज आया, ये कागज आया, ये आया, ये आया, ये आया, ये नहीं होना चाहिए, ये मैकेनिकल वर्क हो गया। ड्यू डिलिजेंस का असली मजा किसमें, क्योंकि देयर आर मेनी सीएस, वो पेपर तो बहुत बढ़िया बना लेते, बट यू नीड टू नो एंड रीड बियॉन्ड दिस पेपर्स कि इसके पीछे का मतलब क्या है, कुछ ना कुछ तो होगा। तो लाइक वी सेड कि वो गाड़ी छोड़ के गया, वो गाड़ी लेके गया, कुछ बुरा तो नहीं लग रहा है इसमें, लेकिन द थॉट, जिस भी बंदे के दिल में थॉट है कि वो गाड़ी चोरी की हो सकती है और वो नहीं हो, इसके लिए मैं क्या डॉक्यूमेंट्स देखूं, ये ड्यू डिलिजेंस का काम है। सो यू नीड टू हैव दैट माइंडसेट, यू नीड टू नो द पर्पस। once you know the purpose, once you know the mindset, then you will start questioning कि और क्या लूं, और क्या चाहिए, और क्या चेक करना चाहिए, you'll start working on it. Okay, now बाल की खाल निकालना बोल सकते हैं, लेकिन कब तक बाल की खाल तब तक निकालनी है जब तक हमें एक डिसीजन लेने के लिए जितनी भी इंफॉर्मेशन चाहिए उतनी लेनी है। नाउ दिस इज एन एंटायर, मतलब अभी वॉट एवर आई हैव सेड इज ड्यू डिलिजेंस इन जनरल, बट देयर कम्स अ लीगल ड्यू डिलिजेंस एज अ लॉयर, क्योंकि बहुत सारे ड्यू डिलिजेंस व्हिच यू गाइस वोंट डू। फॉर एग्जांपल फाइनेंस, एक्चुअली वी डू दैट समटाइम्स इफ यू आर स्पेशलाइज इन फाइनेंस वगैरह। लॉयर तो कुछ भी कर सकता है, लेकिन स्पेसिफिकली लीगल ड्यू डिलिजेंस की क्या प्लेबुक होनी चाहिए। ओके, जैसे अगेन वी टॉक अबाउट द कार करेक्टिंग इंफॉर्मेशन ऑफ सिमेट्री, अगेन आई एम रिपीटिंग दिस जस्ट सो दैट वो बनी रहे चीजें, ठीक है। ओके, नाउ देयर हैज बीन सर्टेन ऑफ दिस स्कैम्स, एनीबॉडी अवेयर एचपी ऑटोनॉमी का एक स्कैम हुआ था? यस, सत्यम का स्कैम कितने लोगों को पता है? एनीबॉडी? I know little bit about it, not much. जो भी है बताओ बताओ, जो भी जितना भी याद आता है। चलो सत्यम छोड़ो, Sir, सत्यम I've छोड़ो। written a blog हाँ हाँ, about Satyam ग्रेट, scam and corporate governance from a post Satyam scam perspective. गुड गुड गुड, ये लिंक शेयर कर दो। बट बेसिकली वो नाउ द सिंस यू हैव रिटन ऑन दैट, जस्ट टेल मी वन थिंग,
क्यों हुआ था, मतलब व्हाट वाज द थिंग दैट कुड हैव प्रिवेंटेड दिस स्कैम, जस्ट टेल मी वन लाइन, और एक लाइन में स्टोरी बताओ और सबके लिए भी समझ में आ जाएगा। एंड आई नीड योर पार्टिसिपेशन गाइस, यार मैं अकेले बात कर रहा हूँ, बहुत बुरा लगता है, ठीक है। यस सर आई थिंक अगर बोर्ड की इंडिपेंडेंस और जो इन्वेस्टर्स हैं वो बेटर तरीके से इन्वेस्ट करने से पहले, डिसीजन लेने से पहले, अगर कंपनी के फाइनेंशियल्स और बोर्ड से बेटर इंटरैक्ट करके और ड्यू डिलिजेंस करके इंफॉर्मेशन गैदर करके फिर अपना डिसीजन लेते तो आई गेस उनके लॉसेस काफी कम हो सकते थे। एग्जैक्टली, सो यू शुड नॉट, जैसे मैंने बोला, यू शुड नॉट बिलीव ऑन व्हाट द फाउंडर, रिप्रेजेंटेशन, बोर्ड ऑफ मेंबर सेज। यू शुड डू योर ओन थर्ड पार्टी इंडिपेंडेंट थिंग। जैसे मैंने बोला, वन ऑफ माय क्लाइंट, उसने बोला कि सर कैप्टेबल ये है, लेकिन मैंने बोला डॉक्यूमेंट दिखाओ, उसने डॉक्यूमेंट दिखाए, डॉक्यूमेंट पे कैप्टेबल कुछ और ही था। तो ऐसा होता है, सो दे विल, you know, management representation will, you know, give certain representations, but you need to recheck that or verify that independently. Then there was this Vodafone की case, very, you know, हाँ, कितने लोगों को पता है ये वोडाफोन की केस, वेरी इंटरेस्टिंग केस फॉर टैक्स डिस्प्यूट, अगर किसी को पढ़नी है तो, वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी ऑल्सो। सो व्हाट हैपन इज, ये वोडाफोन हच की, हच हच पता है ना, वो पुराने जमाने में कुत्ता आता था, वो वाली कंपनी। सो ये वोडाफोन हच, इन्होंने स्पेक्ट्रम खरीदी का चीजें की, देन दे क्रिएटेड एन ऑफशोर कंपनी। हाउ दैट ऑफशोर कंपनी इज क्रिएटेड, व्हाट इज द शेल कंपनी, उसका टैक्स लायबिलिटी कैसे करते, और ये कैसे होता है। और इसके बाद व्हाट कम्स इनटू, अकॉर्डिंग टू दिस केस, देयर इज अ लर्नर थिंग दैट यू कैन पॉइंट इज क्रॉस बॉर्डर ड्यू डिलिजेंस कैसा होता है, ठीक है। नाउ जस्ट a little bit digressing from the topic so that you can understand it better. स्विट्जरलैंड कंपनी, स्विट्जरलैंड पता है सभी को। स्विट्जरलैंड वाज अ कंट्री जिसके पास अपना समंदर है नहीं, मतलब इट हैज नो सी रूट्स, ओके, इट हैज नो मैन्युफैक्चरिंग व्हाटसोएवर, उसके पास कोई भी नेचुरल रिसोर्सेस नहीं है, उसके पास यू नो जमीन भी नहीं है जिसमें वो खेती वेती कर सके ताकि यू नो दे मेक गुड प्रोडक्शंस ऑफ फूड, ऐसा कुछ नहीं है। Still, Switzerland has grown such high demands. There is a very interesting story of how Switzerland has grown, and that has happened because of these aspects of having business accessibility, education accessibility, जिसका ड्यू डिलीजेंस के साथ काम आता है। सबने ये बात तो सुनी होगी कि अगर स्विस बैंक में पैसा है तो वो किसी को बताते हैं नहीं। सो ये सारी चीजें उसमें, जस्ट आई वाज डाइग्रेसिंग फ्रॉम द टॉपिक अ बिट। नाउ लीगल ड्यू डिलीजेंस में क्या क्या आता है, ठीक है, इतने सारी चीजें लीगल ड्यू डिलिजेंस में आती है। एवरीबडी जिसने अभी तक बताया, सी व्हाट आर द लीगल, सबसे देयर आर टैक्स एंड एचआर, ये हमको पता होता है। ये टैक्स एंड एचआर तो हमें पता है कि देयर टैक्स का होता है, वो सीए और सीएस देख लेता है, ईच कंपनी हैज इट्स ओन सीएस एंड सीएस, दे विल लुक एट द टैक्स। एचआर उनके पास हमेशा एक एचआर बंदा भी होता है, वो एचआर के सारे पॉलिसीज देखता है। बट देन एज अ लॉयर आपको इतने सारे ड्यू डिलिजेंस देखने पड़ते हैं। ऑफ कोर्स कुछ कुछ मैंने रिपीट कर दिए है बिकॉज टू चेक मैनेज द डिजाइन। जैसे डेटा प्राइवेसी 2 बार आया है, कॉर्पोरेट है, फाइनेंशियल है, कमर्शियल है, ऑपरेशनल है, टेक्निकल है, एनवायरमेंटल है, आईपी है, आईआर है, यू नो, रेगुलेटरी है, ईएसजी इज एनवायरमेंटल, ओके, एनवायरमेंट, देयर इज साइबर सिक्योरिटी। सो इफ यू आर लुकिंग एट वन थिंग फ्रॉम ओनली साइलोस, तो आप एक चीज को नहीं समझ पाओगे। सो योर जॉब, यू मस्ट लुक एट एवरीथिंग इन कंटिन्यू, होलिस्टिक अप्रोच होना चाहिए, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, इन एचआर पॉलिसी, इफ देर इज सम इशू with the PF of a person in HR, that will be reflected in tax, and that person can go and file case against you. So what happens is HR, tax and legal or litigation will have an overlap. So immediately there can be overlap in many such things. For example, HR की डेटा एंट्री गलत हो गई, टैक्स वाला बंदा उसको कुछ और ही पैसे दे देगा, ऑपरेशंस वाले को और ही प्रॉब्लम हो जाएगा। देन ये सब करने में, ये जो डेटा यहाँ से वहां जा रहा है, इसका गड़बड़ डेटा प्राइवेसी वाले को होगा, ओके, एंड देन दैट विल कम टू फाइनेंशियल्स, उसका सेल्स पे इफेक्ट होगा। ये सब चीजें होती है। सो इफ यू स्पॉट एन एनोमली, फ्लैग इट, नेवर अज्यूम दैट अनदर टीम हैज इट, ओके। जैसे फॉर एग्जांपल, आंसर टू वन ऑफ द क्वेश्चंस ऑफ द टैक्स माइट बी विद द एचआर और वाइस वर्सा, but if you find while going and reading through a document, if you find a flag, just flag it. इसको फ्लैगिंग कहते हैं ड्यू डिलिजेंस में, यू फ्लैग इट। शायद से दूसरी टीम के पास उसका आंसर है, वो रिजॉल्व हो जाएगा, बट यू फ्लैग इट। दिस इज द फर्स्ट थिंग। व्हेन इन डाउट जस्ट आस्क, ये पहला डाउट है ड्यू डिलिजेंस का। पहला वाक्य जो आप ड्यू डिलिजेंस टीम में काम करोगे, द फर्स्ट थिंग दैट यू रिमेंबर इज व्हेन इन डाउट आस्क, और इन एनी लीगल फील्ड फॉर दैट मैटर, ओके। नाउ एक्चुअल ड्यू डिलिजेंस कैसे होता है, ठीक है। नाउ दिस इज अ वेरी, लाइक आई सेड, इट्स अ वेरी एडवांस थिंग। हम इस पे लाइक बेसिक, वी मस्ट नॉट फोकस ऑन दिस, बट
इतनी सारी स्टेजेस उसमें होती है. सो इफ कॉर्पोरेट इज अप्रोच, पहले तो डिफाइन करना पड़ेगा कि हमारी व्हाट आर आर थ्रेशोल्ड्स, हम कौन सी चीजों में ऑपरेट करने वाले, हमारा क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द लीगल ओपिनियन आस्क्ड ऑन, व्हाट डिसीजंस वी आर लुकिंग फॉर. देन हम इसका बैठ के स्टडी करेंगे कि ये चीजों का आंसर देने के लिए व्हाट आर द डॉक्यूमेंट्स दैट आई रिक्वायर. एंड वी ऑलवेज इन दैट रिक्वायरमेंट ऑफ डॉक्यूमेंट वी ऑलवेज लीव अ स्मॉल लाइन, एनी फर्दर डॉक्यूमेंट्स अगर चाहिए तो वी विल आस्क इट अगेन. क्योंकि वो एक डॉक्यूमेंट देंगे, लेकिन फॉर एग्जांपल जस्ट टेक अ स्मॉल एग्जांपल, फॉर एग्जांपल प्लानिंग की स्टेज तो समझ में आ गई, वी हैव टू डिफाइन द स्कोप, हो गया, एंड मटेरियलिटी थ्रेशोल्ड. देन वी विल रिक्वेस्ट द डॉक्यूमेंट्स टू द पर्सन हु इज होल्डिंग द डॉक्यूमेंट. ओके, so for example, there is a land legal case that has been pending in the court of additional commissioner. Okay, he will give the additional commissioner वाला document. लेकिन एज अ प्रैक्टिसिंग लॉयर आपको पता होगा कि डायरेक्ट केस एडिशनल कमिश्नर के पास जाएगी क्या इन रेवेन्यू मैटर्स? यस और नो? हाँ ना बोल भाई. किसी ने रेवेन्यू में प्रैक्टिस की है? एनीबडी आइडिया अबाउट व्हाट रेवेन्यू कोड्स आर? I don't have any idea regarding that because I'm law student. I just started my career this year. ओके चलो आई विल टेल यू. सो व्हाट हैपेंस इज सबसे बेसिक, चलो जरा रेवेन्यू का थोड़ा सा टफ हो जाएगा. आई विल टेल यू ऑफ डीआरटी. डीआरटी इज डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल. मतलब अगर आप किसी बैंक में जाते हो, कर्जा लेते हो, कर्जा टाइम पे नहीं देते हो, तो वो बैंक डीआरटी में जा सकती है कि हमको ये कर्जा वसूल करना है या इसकी प्रॉपर्टी जब्त करनी है. इतना सिंपल होता है. लेकिन डीआरटी का जो ऑर्डर आती है फॉर टेक हिज हाउस ओवर, लेकिन ये ऑर्डर से पहले देयर आर टू थिंग्स दैट मस्ट हैपन. there must be a notice under section 13 of surface act that is given. फिर सेक्शन 17 का एप्लीकेशन लगता है. ये सब हुआ है या नहीं? जैसे अभी हम डॉक्यूमेंट रिक्वेस्ट की बात कर रहे थे. फॉर एग्जांपल, एक बंदे ने मेरे को उसकी कंपनी का बोला कि सर हमारा ये ड्यू पेंडिंग है, उसमें ये डीआरटी का ये हमको ऑर्डर मिला है. वो एक डॉक्यूमेंट देगा, लेकिन मेरे को फिर मेरा दिमाग चलना चाहिए कि अगर सर ये डॉक्यूमेंट है तो फिर इसका ऐसे का मतलब होता है सिक्योरिटाइजेशन एप्लीकेशन. तो इसका पीछे का डॉक्यूमेंट है वो सिक्योरिटाइजेशन एप्लीकेशन का है. इसका सेक्शन 13 का नोटिस का है. ओके, इसका 14(3) का नोटिस किधर है? इसकी पब्लिक नोटिस की थी वो किधर है? तो ये आपको पता होना चाहिए कि अगर मैं एक डॉक्यूमेंट मांग रहा हूं और एक डॉक्यूमेंट देता है तो आप लोग हाँ चलो ठीक है चलते हैं. नहीं, आप सोचो ये डॉक्यूमेंट के पिछले क्या डॉक्यूमेंट्स हो सकते हैं. ओके, सो जैसे नाउ कमिंग बैक to revenue matter, agar the case is pending in the additional commissioner revenue, so additional commissioner is the last resort. usse pehle there might be additional collector, uske might be there might be SDO, there might be SDM and talati. inka kya hua bhai, ye batao. So you need to have this attitude ki whatever the document has been given, you need to stress the history of that document. Okay, then we have to set up this VDR. Okay, virtual data room जिसको हम बोलते हैं. अब ये वर्चुअल डेटा रूम को हम डेटा रूम क्यों बोलते हैं? क्योंकि हम पुराने जमाने में ऐसा फाइल रखते हैं, वैसा नहीं रखते हैं. वी ऑल एज अ टीम of lawyers or litigators or due diligence experts along with our interns we work on a virtual room जिसमें सब classify होता है कि कैसे करना है. then we review or we cross reference. ठीक है, इसके लिए there are many now for example I'm also an engineer by nature. तो मेरी फर्म में and my all juniors I make themselves with an acquainted कि आपको थोड़ी सी टेक्नोलॉजी आनी चाहिए और आज के जमाने में AI भी आना चाहिए. नहीं भी आता है तो I take personal and conduct sessions every month. AI agentic AI ये इसका इस्तेमाल करके we need to cross reference it. Okay, then we identify the issue, then we identify the risk, then we report and then we close. ये होता है प्रिपरेशन फेज, इन्वेस्टिगेशन फेज एंड रेजोल्यूशन फेज. इसके डिटेल में हम थोड़ा सा बाद में जाएंगे. आई एम जस्ट गिविंग यू एन ओवरव्यू. ओके, नाउ हमेशा याद रखना डिजिटल फुटप्रिंट्स आर परमानेंट. ओके, बोलता है ना हमने व्हाट्सएप से ये डिलीट कर दिया या मेरे यस तो मेरे फोन से ये वीडियो डिलीट कर लिया. दैट वीडियो इज नॉट जस्ट डिलीटेड, इट जस्ट मूव्स टू द अदर लेवल. आप जैसे फॉर एग्जांपल यू आर इन अ पीसी, आप डिलीट करते हो, डिलीट करके रिसाइकल बिन में जाता है. तो वैसे तो आपको लगता है वो डिलीट हो गया, लेकिन वो रिसाइकल बिन में है. आप रिसाइकल बिन से रिस्टोर करो, देन इट विल अगेन अपीयर ऑन योर लैपटॉप. ओके, देन यू डू शिफ्ट डिलीट. सो व्हाट, रिसाइकल बिन से भी चला गया तो आपको लगता है वो रिसाइकल बिन से चला गया, बट देन इट इज नॉट डिलीट, इट गोस टू द अदर लेवल. ओके, then it parses information, then there is a data and there is a metadata. ये भी चीज अब now since I work also with cyber security, so ये चीजें होती है. Now when we are doing this in due diligence,
तो हर एक डॉक्यूमेंट जिसके साथ हम काम करेंगे उसके साथ वी हैव टू लॉग एंड टाइम स्टैम्प दैट. ओके, वेरी इंपॉर्टेंट. और आई एम टेलिंग यू, आज मेरे से लिख लो, मई 2027 के बाद यू विल सी अ बूम, बिकॉज मई 2027 इज द लास्ट डेट फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ डीपीडीपी. तब ये लगेगा लॉग टाइम स्टैम्प, क्योंकि आपको ये प्रोड्यूस करना पड़ेगा डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड में, तो ये सब करना पड़ेगा. नाउ एज you know, I've just given you partner, senior associates, so what and how it is done, you know, how the work is divided among different people. Most important, जैसे मैंने बोला, never review a document in isolation. Very important है, क्योंकि I am saying this again and again because I have gone through many of these cases and I come to know कि नहीं होता है. For example, जैसे मैंने बोला, कैप टेबल पे बता रहा है कि 12,000 इक्विटी शेयर है प्लस ईसॉप का पूल है. Okay, if any doubt with ESOP is equity stock options, employee stock options, sorry, employee stock option. अगर ये सारी टर्म्स, आई होप यू नो दिस टर्म, अगर नहीं पता है तो आई जस्ट रिव्यू इन शॉर्ट. बताओ. अरे चले गए क्या सारे, सो गए क्या, मैं इतना बोर बात कर रहा हूँ क्या? नहीं सर. हाँ. तो Don't know about this. कैप टेबल अगर 12,000 इक्विटी शेयर्स दिखा रहा है इन ESOP pool. For example, I'll just tell you interesting thing, and this is a real story, and you can see, watch the video in the कल ही ये प्रोग्राम हुआ है पुणे में. There is this movie, anybody of if you are Marathi or in living in Pune or Maharashtra, there is this movie called as देऊळ बंद हुए crossed 100 crore. तो उस 100 crore की पार्टी थी कल, and in that party there was this person who is also my client. His company's name is Nibe Limited. Okay, so the Nibe person gifted 300 shares. So that is an ESOP. He gifted 300 shares to the person. उस शेयर की वैल्यू क्या थी पता है? 30 रुपए. ओके, 2022 की बात है ये. टुडे दैट शेयर स्टैंड्स एट 2000. 300 शेयर्स गिफ्ट कर दिए थे. सो एवरी कंपनी में एक शेयर का वैल्यूएशन ऐसा होता है जिसमें ESOP कहते हैं, इक्विटी स्टॉक ऑप्शन. कि यार देख, तू मेरा दोस्त है, बहुत अच्छा दोस्त है, मैं चाहता हूँ कि तू मेरी कंपनी या स्टार्टअप में काम करे. अभी मेरे पास बिल्कुल पैसा नहीं है, तो तू ये काम के बदले तेरे को थोड़ा पेमेंट देता हूँ, तेरे को 10, 12, 15, 20, 50,000 रुपए देता हूँ, लेकिन तेरी वैल्यू जो है, योर वैल्यू इज दैट ऑफ 3 लाख 5 लाख. व्हाट आई विल डू इज आई विल गिव यू स्टॉक ऑप्शन. स्टॉक ऑप्शन देने से क्या होता है? स्टॉक ऑप्शन देने से फायदा ये होता है कि वो बंदा कंपनी के लिए और काम करेगा, क्योंकि कंपनी ग्रो होगी, स्टॉक बढ़ेगा, तो उसका फायदा इनडायरेक्टली उसको होगा. फॉर एग्जाम्पल, नारायण मूर्ति सर, when he founded Infosys, initial times में, you know, the only investment Sudha Murthy ma'am made was only 10,000, and the driver of the Infosys, उसको देने के पैसे नहीं थे. Infosys के 4% शेयर उसके पास थे. Imagine Infosys के 4%. तो now I'm coming to the how to check it. जैसे मैनेजमेंट कैप टेबल पे अगर ये दिखा रहा है, then you should cross reference this document with ROC filing. What is ROC? It is Registrar of Companies or MCA portal. Okay, so MCA portal पे 10,000 दिखा रहा है यहाँ पे, तो ये क्रॉस रेफरेंस करना पड़ेगा. So never review a document in isolation. Every document that you review, you should always find some basis for that document. The most valuable findings live in the contradiction between public statutory filings and private management data. Reconcile line by line. बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि ये चेक करना पड़ेगा. दिस इज द मेन वर्क ऑफ ड्यू डिलिजेंस. क्या क्या चेक करोगे आप? ये एक मैट्रिक्स होती है. क्या क्या चेक करोगे आप? सबसे पहले, इफ यू आर लुकिंग एट द कंपनी, यू विल फर्स्ट थिंग दैट यू विल चेक इज आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन. देन यू विल चेक ROC फाइलिंग. ROC फाइलिंग्स आर रजिस्टर ऑफ कंपनीज फाइलिंग, कि हर साल उन्होंने सारे फॉर्म्स भरे या नहीं. एनुअल फाइलिंग्स होते हैं. नाउ दिस आई एम टॉकिंग अबाउट कंपनी. Now, some of the lawyers will decide to practice in very interesting and niche field. I also decide some of the matters in that matter. That niche field is called as corporative law or trust matters. जैसे चैरिटी कमिश्नर वाला इशू. चैरिटी कमिश्नर जो पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट होते हैं, प्राइवेट ट्रस्ट होते हैं, इनको फाइलिंग करना जरूरी होता है. इवन इफ दे आर टेकिंग अ लोन, एवरी लोन शैड बी एंटर्ड इनटू शेड्यूल 1, एवरी प्रॉपर्टी शैड बी एंटर्ड इनटू शेड्यूल 2. वो सारे मैच हो रहे हैं या नहीं? एंड इफ दे आर टेकिंग any loan must be taken with the prior sanction of charity commissioner under section 36A. तो ये सब चीजें आपको चेक करनी पड़ेगी. यहाँ पे मैं ROC बोल रहा हूँ, इसका मतलब ROC नहीं, you must look at what company that you are dealing with or what entity that you are dealing with and you have to recheck that document उस बंदे के साथ.
कभी आरओसी आएगा, कभी एमसीए पोर्टल आएगा, कभी चैरिटी कमिश्नर आएगा, इफ एजुकेशनल है तो एजुकेशनल डिपार्टमेंट आएगा, ऐसी चीजें। देन देयर आर मटेरियल कॉन्ट्रैक्ट्स है क्या, what are the controls and what are the control, what are the clauses, what are the strict exclusivity provision, very important। अगर कंपनी बोल रही है कि there is IPR involved, IPR is intellectual properties involved, how are these IPR divided, are there assignment deeds that are done, who owns the IPR, okay। जनरली मैं भी ये सजेस्ट करता हुई, फॉर एग्जांपल मैं हूं, मेरी कंपनी है, वी डेवलप सम ट्रेडमार्क करते 2 मिनट के लिए, ठीक है, मेरी कंपनी का ट्रेडमार्क करना है। नाउ ट्रेडमार्क के 2 ऑप्शन है, मैं ट्रेडमार्क कर सकता हूँ कंपनी का नाम, कंपनी विल ट्रेडमार्क, और मी एज अ इंडिविजुअल पर्सन विल ट्रेडमार्क। किसके नाम पे है वो ट्रेडमार्क, मतलब हु इज द ओनर ऑफ द ट्रेडमार्क, ओनर ऑफ द ट्रेडमार्क कंपनी है या ओनर मैं इंडिविजुअल हूं। नाउ एज अ लॉयर, ठीक है, एज अ लॉयर आप मुझे बताओ, एज अ लॉयर प्रैक्टिसिंग इन आईपीआर फील्ड, आप अपने स्टार्टअप वाला दोस्त है जो करना चाहता है, उसकी एक कंपनी है या स्टार्टअप है, हु शैल ओन द इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, द कंपनी और द इंडिविजुअल, आप बताओ, थोड़ा बात करते हैं यार। बताओ। इंडिविजुअल सर जी। कंपनी। क्यों? बहुत 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 आंसर्स आर राइट, एवरी लाइक आई सेड, लॉयर होता है जो हर कोई आंसर लेता है इंडिविजुअल भी कंपनी हो करो, सकता इंडिविजुअल है, करो। कंपनी भी। नहीं, एज अ लॉयर आप उसको क्या एडवाइस करोगे? इंडिविजुअल। इंडिविजुअल। क्यों 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 इंडिविजुअल, जो इंडिविजुअल बोल रहे हैं वो इंडिविजुअल क्यों? सिक्योरिटी रहे। क्यों कंपनी के पास सिक्योरिटी नहीं होगी? अरे स्टार्टअप है, उसी का खुद का स्टार्टअप है, वो बंदा ही खुद ही फाउंडर है स्टार्टअप का। अगर इंडिविजुअल बेस्ड करेंगे तो फिर ये है कि अगर कुछ लीगल टर्मिनोलॉजी में अगर कुछ केस वगैरह आता है तो हम पे लाइबिलिटी आएगी इंडिविजुअल, बट अगर हम कंपनी में करेंगे तो कंपनी पे केस जाएगा, तो वो कंपनी की लाइबिलिटी इशू होगी। कंपनी मेरी तो है, उस पे हम कंपनी भी मेरी है। सर आपकी नहीं, सर आपकी कंपनी है, आई अंडरस्टैंड, बट द थिंग इज दैट कि अगर हम पे लाइबिलिटी आएगी तो हम ज्यादा फंसने के चांसेस में, बट अगर कंपनी पे आएगी तो उस पे हम काम कर सकते हैं, मतलब उस पे हम कंपनी को भी बचा सकते हैं, खुद को भी बचा सकते हैं। अगर हम पे आए ज्यादा लाइबिलिटी होगी, ऐसा है। ठीक है, ये मतलब मेरा हाँ चलो पीओवी। पहले, बेसिकली सर यस यस यस, पर्सनल जो असेट्स हैं वो सेफ रहेंगे। सी ओके ओके, हम आईपीआर की बात कर रहे थे। दिस आईपीआर के मामले में एज अ पर्सन हु इज, कंपनी इज अ सीक्रेट लीगल एंटिटी, आई एम अ सीक्रेट लीगल एंटिटी, बट मैंने स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन बोला था कि यू आर एडवाइजिंग योर फ्रेंड हु इज स्टार्टिंग अ स्टार्टअप, उसका स्टार्टअप है, उसको करना है ट्रेडमार्क, वो क्या स्टार्टअप के नाम पे करे, खुद के नाम पे करे, तो एज आप बंदे की भी पोजीशन सोचो। नाउ यू मस्ट अंडरस्टैंड, जैसे अभी दिस इज माय पर्सपेक्टिव, एवरीबॉडी हैज इट्स ओन पर्सपेक्टिव, एंड आवर जॉब इज नॉट कि ये कर या ये मत कर, आपको दोनों चीजें बतानी है। जैसे आई विल टेल यू एग्जांपल्स ऑफ बोथ। फॉर एग्जांपल इफ ही फाइल्स इन द इंडिविजुअल नेम, क्या होगा फायदा? सबसे पहला और बेस्ट फायदा उसको वही लगेगा, इंडिविजुअल नाम पे फाइल करेगा ना, उसको गवर्नमेंट फीस आधी लगेगी। आईपीआर को, ट्रेडमार्क को इंडिविजुअल नाम से फाइल करोगे आपको 4,500 रुपए लगेंगे, अगर आप किसी कंपनी के नाम पे करोगे यू हैव टू फाइल 9,000। ये बंदे के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टार्टअप है वो। सेकेंडली, अगर 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 मैं इंडिविजुअल हूं, मैं इंडिविजुअल नाम से लेता हूं ट्रेडमार्क, बट आई नीड माय कंपनी टू यूज माय ट्रेडमार्क, आई कैन डू एन असाइनमेंट इट। जैसे मैंने जमीन खरीदी लेकिन मैं ये जमीन यूज नहीं कर रहा हूं, सो आई कैन रेंट इट आउट, यस और नो? यस सर। यस सर, यस सर। सिमिलरली यू आर फॉरगेटिंग दैट आईपीआर इज आल्सो एन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ओनली, लेकिन है तो प्रॉपर्टी ही। तो अगर मैं मेरी जमीन गिरवी रख सकता हूं, किसी को यूज करने के लिए दे सकता हूं, लीज कर सकता हूं, मैं मेरे आईपीआर को असाइन कर सकता हूं, दैट इज कॉल्ड एज असाइनमेंट डीड। सो आई विल ओन द ट्रेडमार्क एज एन इंडिविजुअल एंड आई विल असाइन दैट ट्रेडमार्क टू माय कंपनी। उसका फायदा भी होगा, उसको पैसा कम लगेगा, उसको कंप्लायंस कम लगेंगे। तो ऐसी चीजें देखनी पड़ती है। अगेन विल मूव ऑन टू, यस सॉरी, so what I was saying is, if an individual will register the IPR in his own name, what he'll get is he'll get that IPR in his own name and he can then do an assignment deed to a company. So he will reduce the government filing cost, which is the very important basic which is important concept or very crucial matter when it is a startup founder. इसलिए I'm just explaining in English. Now we'll move on to our PPT again. चलो आगे बढ़ते हैं।
I was just checking that are you guys with me or not. Then we talk about सर IPR, core IP registered है, founder personal name है, property document है, ये सब करते हैं. Then again we talk about corporate labor, data protection, environment. I'm just taking it in a big fast manner. आखिर के 5 मिनट बचे मेरे ख्याल से, नहीं एक ही मिनट बचा यार, सॉरी. नाउ ये मैं थोड़ा सा बंद करता हूँ. I'll stop sharing and I'll just tell you one thing. जैसे मैंने before starting only I've told you, very important, because due diligence is a concept which is very vast. We can spend time on one particular due diligence, which is IPR, which is legal, which is tax, etc. ROC, basic due diligence. Now what I have done for you guys is, and what I've done for my juniors is, I have created an entire sort of 70 pages ki handbook, in which there is a way to understand due diligence from basics. I will just share that with you. You look at this. I hope it Thank is you very much, sir. visible. So it is Introduction to Legal Due Diligence, Practical Handbook for Law Students, First Year Lawyers, Practical Training Manual, Corporate Transaction Due Diligence. ये मैंने बनाया है. How to read this book, इसके पहले लिखा है how to read this book. Okay, this book is divided into how to read. This book is divided into 10 chapters. Foundational chapters 1 to 3, core discipline due diligence 4 to 8, work practical examples are chapter 9, and professional skill lawyers need वो chapter 10 में है. Each major topic will have what is it, why it matters, where it is used, practical example, common mistake, practical tips, key takeaway. इसके बाद every chapter will have a quiz which is a short term MCQ, 5 MCQs, 5 sec. And why I'm doing this question, because आपको ये चीज आती है नहीं आती है, there is only one thing, you question yourself, then you will understand मुझे समझा या नहीं. And in this entire book there is lawyer's note, there is a common mistake, there is a practice tip, case study, and key takeaways. So I have made this entire document. It is all 72 pages. Okay. ओके, तो ऐसा मैंने पूरा Okay, sir. बनाया हेलो है. सर, ये कैसे मिल सकती है फिर, मतलब पीडीएफ वगैरह इसका? यस यस, मैं वही बोल रहा हूँ. तो आप किसी ग्रुप में हो, ये मुझे नहीं पता ये कैसे शेयर करेंगे, लेकिन जो भी बंदा मेरे से कनेक्ट करेगा, या फिर यू गाइस माइट बी इन द ग्रुप, आई विल शेयर विद द कोऑर्डिनेटर्स. ओके, whoever the coordinator is. Okay, Now sir. I will just for 5 minutes, I'll just take some questions. Just a minute. And again you can follow me on LinkedIn, ask me any questions on LinkedIn. You can मेरा मेल आईडी भी है, you can mail me, you can WhatsApp me. And बस calling थोड़ा सा tough हो जाता है, because I might be in any meetings, I might be in anything, so calling becomes tough. So instead you drop a message, I'll reply back to you. Okay, so essentials आपने बोला Praneet, kindly share us the PPT recording. Yes, PPT will be shared. Recording, I'm not sure, recording is with this our the organizers collective council. तो what documents are commonly reviewed during a legal due? बहुत सारे, जैसे मैंने अभी बोला कि what documents are done, अलग अलग प्रकार के documents होते हैं. अपनी प्रॉपर्टी नाम के लिए किसी और के हाथों में सौंपना, मैं हाँ अच्छा. हेलो सर, व्हाट डॉक्यूमेंट्स आर कॉमनली रिव्यूड ड्यूरिंग लीगल ड्यू? जैसे मैंने बोला, व्हाट डॉक्यूमेंट्स इज डिपेंड्स ऑन व्हाट क्वेश्चंस. So the list of documents that are needed, जैसे मैंने, that is the second process. Document request will be based on the scope of the work. Scope of the work क्या है will decide on what documents are to be reviewed. Poor due diligence on investor part, promoters loyalty towards company, feedback form. Please provide feedback. Feedback form I'm not no. Sharing sometime with company, individual into company because benefits nahi. Yes, then we talk about separate legal entity. If and you have any questions, I'm just taking some questions. Okay. थैंक यू ग्रेट, थैंक यू. व्हाट आर द मोस्ट कॉमन मिस्टेक बाय जूनियर लॉयर? हाँ, मोस्ट कॉमन मिस्टेक यही है कि जो व्हाटएवर डॉक्यूमेंट इज गिवन टू यू, रीड इट नॉट इन द आइसोलेशन, रीड इट विद अंडरस्टैंडिंग एंड कनेक्टिंग द डॉट्स. नेवर इन पूरा इन लॉ फील्ड ऑल्सो, नेवर ट्राई टू स्टडी समथिंग इन साइलोस. Study everything in a holistic manner, because what decisions you take, you need to understand what decisions will be. For example, if you are filing something in lower family court, I'll give an example of family court. In family court, I'm filing something, I'm not filing interlocutory application. You need to understand that every filing that you do when you are in litigation, okay, every filing that you do, every pleading that you will do, every notice that you send will be used against you till Supreme Court. So you need to have, whatever you are doing, look it not from that small work perspective, look it in a holistic perspective. सबसे बड़ी mistake यही होती है. Thank you sir, such for saying. Does CSR or social will come in legal DD? Yes. And I'll ये कौन है? Shagun, I'll just explain you one more important part that has come up. Okay, I was a member and I was sitting there with NSE. National Stock Exchange has come up with something called as social stock exchange. Okay,
So what is this social stock exchange? So you as a Section 8 company or an NGO or a trust can register your projects on that. The way company raises money on behalf of the equity. Okay. Similarly, the trust, the Section 8 companies, not for profit organization, now can raise money by using NSE platform. Just go check social stock exchange. I was one of the person who was present there when this social stock exchange was getting ready. So CSR has come in a very big way. Sorry. Okay, sir. Thank you. Understand. What are skills to learn as law students to enter due to reading? First skill is that you must able to read and read between lines. Second is reading, not only reading, better reading and faster reading. You must have your, you must be habituated with reading a lot. Okay, make that a habit to read. Okay, then you need to understand the financial statements. The basic that you can learn is pehle to learn about reading the financial statements, because these documents are technical documents. Technical documents ko padhne ki, there are certain ways that you, in a way that you need to read these technical documents. So you need to understand those. Sir, please give us roadmap how LLB student can shape his her career in due diligence, any type of practice to develop. Like I said, I will share that PPT which has a complete thing. And not only in due diligence is the aspect in any practice that you do. That was what I was saying. Tomorrow, if you become a litigation lawyer or a family lawyer or a dispute lawyers or any lawyer for that matter, it is your way to understand and do due diligence of your client as well. Okay, then due diligence process only scrutinized at an early stage or anytime. Shagun, due diligence can come at any time. What happens is you have to take a decision. Your company is running now. Tata is running brand, both bada brand chala rahe Tata. Now Tata wants to go into some things, do certain things, or take certain decisions. Whether to take a decision or not to take a decision will depend on the due diligence team. So Shagun, it will depend on the question. Every time business will grow, we will have to face answer some questions. So every question is a due diligence thing. Okay. Thank you so much for sharing details. Thank you. Thank you. How can we dive deep into diligence internship, sir? Read. Only read, and then first of all, everything. No lawyer. I'm telling you, no lawyer, no firm, no organization will hire you to teach you. You must be in a position that, sir, if you hire me, I will give you this value. You should be able to provide value to your organization that you're joining or your senior that you're joining. You show that value and people will give you chance. So, and once you get the opportunity, grab it. And then you show, if the work is supposed to be done by 10, it is done by 9:55. You show this. And you'll sell through. Okay. What role does due diligence play in reducing post-acquisition litigation? Of course, there is a lot of rules. Matlab, very important. Thank you, sir. Very helpful session. Please share the PDF with us. May I send you a contact request on LinkedIn? Yes. Sure. मेरे नाम से ये मेरा LinkedIn यार, मतलब एडवोकेट शुभम केनेकर, यू विल फाइंड इट. ओके, PDF देता हूँ. PDF will of course तुम्हारे लिए बनी. That is for my internal juniors only, but now you all my juniors only. So I'll share that. That's for internal thing. Only thing is भाई उसका IPR मेरे पास है. You guys use it. For your knowledgeable. But if you start selling it, then I'll come for your job. I'll come for your money. ठीक है? Lawyer हूँ मैं. You use it. You give it to others to use for freely. हाँ, नहीं, आप फ्रीली यूज करो, आप लोगों को फ्रीली दो, आप उसको बेचो मत. यही बस कहना चाहता हूँ. अब आप पता भी नहीं, यू माइट नॉट बी हैव दिस आइडिया नाउ बिकॉज आई सेड दिस, नाउ यू विल यूज दिस एज एन आइडिया, सो डोंट डू इट. यस, थैंक यू. मोस्टली किस में रहता है ये? पलक का क्या सवाल है? आई एम नॉट गेटिंग. मोस्टली किस में रहता है सर? डीडी मोस्टली कॉर्पोरेट आईपी एंड ऑल में ही रहता है या नहीं? एवरीवेयर. ड्यू डिलिजेंस विल कम इन एवरीवेयर. You are good at teaching, you make session fun. With AI increasing assisting document review, how do you see a role of lawyers evolving in legal Yes, very important. And I say you will not be replaced by AI. लिख लो ये mind में, you just put it in your mind. You will not be replaced by AI. You will be replaced by people using AI. So you do contract drafting. AI can never replace it. So you have to have then class over AI. For example, I say my juniors ki learn AI. For example, if you have to do a contract drafting or contract review for that matter, there is an AI called as Harvey AI. Harvey Specter के नाम से उन्होंने Harvey AI बनाया. So Harvey AI is used for doing this contract reviews. So, but to review a contract as a lawyer, you must know कि यार boilerplate clause का होता है, इसमें है या नहीं है. जो है ही नहीं, the boilerplate clauses or the clauses that are not there in contract which you don't know, how can you review it? To use AI, but for that you have to have your own knowledge.
Okay. Just now checked your LinkedIn profile. You're naval officer. Yes, I was serving with Navy. I served in from 2012 to 16 with an increased use of AI lawyer. How did the lawyers are able to navigate through? Yes, AI के बारे में हमने बात कर दी. Sir was naval. Yes, thank you. वाटरमार्क निकालना पड़ेगा फिर सेल करेंगे. हाँ मैंने बोला ना, तुम करो मैं आएगा. आईपीआर लॉयर हूँ और मैं आई एम टेल यू इफ यू सेल फॉर 10 रुपीज ना, मैं 10 लाख रुपए वसूल करूंगा. देख लेना. चलो, आई एम सॉरी गाइस, थोड़ा सा लेट हो गया है. एक्चुअली द सेशन वाज सपोज टू लव यू सर जी, लव यू. यस यस यस, थैंक यू. ऑलरेडी 10 मिनट लेट हो गया है. एवरीबडी मस्ट हैव सम अदर वर्क. So I've also done PhD in IPR. Good. Thank you so much sir, it was really fun session. सर वैसे आप वो पीडीएफ सर आप व्हाट्सएप सेपरेटली ग्रुप पे कोचिंग भेज सकते चलाते हो? हो? नहीं यार, नहीं सी सर आप सेपरेटली कोचिंग चलाते हो? सर चला अरे लीजिए, मैंने हम लोग आपके पढ़ लेंगे आगे आपसे. अरे वैसे भी पढ़ लो. टीचिंग इज माय पैशन. See, I am teacher not by choice. I am not a teacher by choice, not by profession. So I like teaching because मैं So जानता then हूँ कि where can we job reach बनता you? है. मैंने बोला you connect me on LinkedIn. सर फॉलो कर लिया हमने जाके अभी Okay, आपको. sir. Yes. Connect me on LinkedIn. Connect me on my mail ID is there on that PDF. Okay, so you can Sir, drop a mail. Yes. Sir, even though my phone storage is full, but I am downloading LinkedIn just to stay connected with you. अरे ऐसा मत करो, फोन स्टोरेज को ठीक कर लो. ठीक है पूरा. गौतम थैंक यू, लव यू ऑल गाइस, थैंक यू फॉर. चलो लास्ट कॉल. आई एम जस्ट 1 मिनट देता हूँ. एनी क्वेश्चंस दैट यू वांट टू आस्क, आप अनम्यूट करो एंड आस्क क्वेश्चंस. एनीथिंग. यस, अनमोल इज रेजिंग हैंड फॉर लॉट ऑफ टाइम. अनमोल प्लीज सॉरी. अनमोल बोलिए. अनमोल सर, अनमोल गिल. यस. अरे Anmol and two others have raised the hand. And who are those two others? Let me just check. सर वैसे वो पीडीएफ हमें ग्रुप चैट में भी प्रोवाइड होगा ना? हाँ. Actually, I am not in that group. So what I'll do is the person who is coordinating this, I'll send that PDF to that person. Okay. Okay, sir. Thank you, sir. Yes. Thank you so much, sir. Forla. That was Yes, thank truly you. an insightful session. I think today's discussion showed us that due diligence is much more than simply reviewing documents. It's about asking the right questions, paying attention to details, and identifying risk and developing the habit thinking like a lawyer before arriving at a conclusion. And that's what made today's session so valuable. It gave us a glimpse into the kind of practical thinking that legal professionals rely on every single day. On behalf of the collective council, thank you once again, sir, for sharing your time, your experience, and your insights with all of us. Thank you so much. Thank you. Last call. Anyone? Coursera or HQ Life is good for learning short courses like yes, Coursera. Coursera नहीं, Coursera है वो. Yes. ठीक है. Thank you. Sir, Yes. by the way, you look great, sir. अरे भाई बस. Hello, sir. I'm audible to you. Yes, you're audible. Yes. Sir, I just wanted to ask. It's a kind of personal question, but still, where do you practice, sir? See, as world is changing very fast, so I don't know where I practice. Although I stay in Pune, but I practice in Mumbai. I practice in Uttarakhand. Last month I was in Jaipur. Bangalore is again a very big hub. So basically, I stay in Pune. I practice in Pune and Mumbai, but I travel a lot. Thank you, sir. Yes. Yes, Tanishq. Yes. Chalo, hand raise hai, but nobody's asking me questions, so we'll just move. So Thanks. there is Yes. one competition we were organizing, that's National Bail Advocacy Competition. So NBAC has been designed to recreate that journey as close as possible. So the competition unfolds across 3 progressive rounds. It begins with the document analysis and written bail round, where participants receive a realistic criminal case file, including the FIR, arrest memo, medical examination report, and supporting the documents, and prepare a professionally drafted written bail memorandum. Those who qualify move to the professional oral bail advocacy round,
where fresh investigation material is introduced. Participants refine their legal strategy and present a live bail application before a simulated bench. And finally, the competition concludes with the final round, where participants argue with a far more complex constitutional bail matter, including personal liberty, judicial discretion, and public interest. So rather than testing only how confidently someone speaks, NBC focuses on research, drafting, legal strategy, and advocacy together. Whether it's preparing a due diligence report or preparing a bail matter, the foundation remains the same. You begin by understanding the facts, analyzing the material before you, identifying the legal issues, and only then building your arguments. So that's why NBAC has been designed as more than just another advocacy competition. It's a practical learning experience. Beyond the competition itself, every registered participant will receive a certificate of participation, including legal resources, access to our job simulation program in cyber crime investigation and digital law practice, and opportunity to be considered for internship opportunities with our legal partners. And outstanding performance will also be recognized through awards for Best Criminal Law Researcher, Written Bail Memorandum, Best Public Prosecutor, and Best Defense Counsel. But beyond the awards, what we hope every participant takes back is something far more valuable: greater confidence, sharper legal reasoning, and a better understanding what responsible advocacy truly demands. So, if today's session has encouraged you to take this next step into your legal journey, we would genuinely love to have you as a part of the inaugural National Bail Advocacy Competition. We will be sharing the brochure registration link in the chat immediately after this session. To take a moment, go through them, and if this experience resonates with the kind of lawyer you aspire to become, we would be delighted to welcome you. Once again, our sincere thanks to Advocate Shubham Kenekar, sir, for such an insightful session, and thank you to each one of you for joining us this evening. We hope to see many of you again, this time as participants at our competition, because liberty deserves advocacy. Thank you, everyone, and have a wonderful evening. Thank you so much. So as we come to the end of this session, I would like you to I will kindly request you to fill out the feedback form in the chat box so that it can help us organize meaningful events in the future. Now I will just request everyone to switch on your camera for the virtual photograph. Kindly join us for a quick picture. Yes. मेरे को अनपिन कर दो यार. Yes. And guys, please participate in these competitions. This competition and these simulations will help you understanding the legal, because every college in the all over world will just teach you basics, but the competitions like this will give you a real things. Okay. So my personal करो ऐसे competitions. ठीक है. Thank you everyone for joining us today. We hope to seeing you again in the upcoming sessions. Yes, sir. Okay, sir. Please switch on your cameras. Okay. Thank you everyone. Have a great evening ahead. Stay connected with the Bye collective bye. council. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank Thank you so much, sir. Thank you, ma'am. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, ma'am.